Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, Venkatraman. Good morning, Varun. Good morning, Rajiv. Good morning. We'll start the screening in 2 minutes. जितने भी लोग ट्रेड में हैं, MTSL लेके चलो. जो जो लोग टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, MTSL स्ट्रॉन्ग अलोकेशन पॉइंट के साथ. टारगेट नेक्स्ट इज 2900. 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, गाइस. विल स्टार्ट इन 2 minutes. Good morning, Sudhir. Hope you're also in the trade. Fifty pips running. Great. This is the formula for today. Okay. So just apply the formula. We'll start in a minute. 1.618 and दोनों नंबर का आप अप्लाई कर सके चल सकते हो. अप्लाई करके चल सकते हो. Gold touch yesterday's high 1 day time frame. Wick to wick and rejection. Yesterday high अभी तक टच नहीं हुई है. 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ. सब लोग चार्ट्स क्लीन कर लो and hit the like button, guys. Now inducement created in gold, and can I
enter for long position to continue riding the upward movement. Definitely. 1 second. Screening abhi hogi. Understand the screening and execute the trades. So we'll start. At the current scenario, what do you guys notice? At the current scenario, what do you guys notice? डेली टाइम फ्रेम में एक मूवमेंट ड्रॉप हुई थी, उतना ही मूवमेंट आज के दिन में कवर अप करके कंटिन्यूटी में मूवमेंट हुआ था, करेक्ट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, जो कि हमारा टारगेट हिट हुई थी। एंड वैसे ही टारगेट हिट हुआ एंड सस्टेन हुई मार्केट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन दैट यू गाइस हैव टू डू? यू गाइस हैव टू मल्टीप्लाई द सर्कुलेटिंग डिमांड व्हाट इज एट द करेंट रेंज। जैसे आप सर्कुलेटिंग डिमांड को मल्टीप्लाई करते हो, what do you notice over here? Market took a rejection from 50% area of the second demand, which is 2832.424. अभी मार्केट ने 50% से रिजेक्शन तो ली, what is the next step? मार्केट कहाँ तक मूवमेंट करेगा? How does the movement looks like? वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए we have to come down for 4 hours. Before coming down to 4 hours, what do you guys notice? There was a rejection at the minimal point, right? When there was a rejection at minimal point, what will market tend to do? Market tend to show a movement that there is a buyer's biasness in the current day of the movement, right? Current day of movement मतलब आज के दिन में नहीं, which was on Feb 28th. तो आज के दिन की ट्रेड अलोकेट करने के लिए लेट्स कम डाउन टू 4 hours. What do you notice in 4 hours? Right, definitely market took a rejection, continued the movement. Before looking into anything, let's allocate the first point of action. जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे जनरेट हुआ है, रिट्रेसमेंट के बाद क्या उतना प्रीवियस सप्लाई हिट होके सस्टेन हुई है? डेफिनेटली हिट होके सस्टेन हुआ है. What is the next plan of action? There are two ways of looking into the market in the 4-hour circumstances is one, allocate the movements, right? Which movement will you allocate? Number one. These are the first movements that you allocate. जैसे ही इस movement को allocate किए, excuse me, जैसे ही इस movement को allocate किए, what is the next plan of thing that you have to look? अगर market को rejection लेके नीचे आना है, market has to build an inducement, right? 3 partners. So at the current stage, इस point of action से mathematical edge 1 draw करते हैं, right? Let's look into the perspective of square root of 2832.720. जो नंबर निकलेगी with a 2 decimal movement action, उस नंबर को हम ऐड करेंगे 0.618 से, right? जो वैल्यू निकलेगी with a 2 number into decimals, उसे हम रेज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे बाय 2. उसका टारगेट आके हमारा था कल के दिन में 2892, राइट? जब कल के दिन में 2892 टारगेट हिट हुआ, यस डेफिनेटली टारगेट हिट हुआ. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? ड्रॉ अ लेवल आउट ओवर हियर. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक लेवल अलॉकेट कीजिए एंड वेट फॉर द मूवमेंट. This is for the 4 hours. This is for the 4 hours. Once the 4-hour allocation is done, what is the next thing you guys have to look for? 1 hour. In 1 hour, कल के दिन में मार्केट क्या किया था? कल के दिन में मार्केट एक गैप अप ओपन करके,
right? Sustainability market took the rejections from each and every point. How? If we look into the movement action plan, what do you notice? This was my first demand. What do you notice? This was my first demand from this point of action to this point of action. Market completed and multiplied on the same variant in the Asian session, right? ये Asian session में complete हुई थी. Post completion, what did the market do? Every candle had a partner, inducement 1, inducement 2, inducement 3. And at this stage, we looked for a long in the evening session yesterday. Reason? Market created the liquidity point of action. With that liquidity point of action, there was a movement allocated, right? First movement कितना allocate किया था? जितना हमारा previous movement allocation है इस point of action से यहाँ तक उतना ही यहाँ पे inducement के साथ allocate किया, right? So जैसे ही inducement के साथ यहाँ पे allocation दिखी थी, what is the next plan of action that you guys have to work for? The next plan of action that you guys have to work for is the next movement. हमारा target one क्या क्या है? Allocate the targets through the mathematical numbers. अगर mathematical numbers allocate कर रहे हो, तो what is the square root numbers that you are getting? First target is at 2878, second target is at 2886, third target was at 2892, right? So जैसे ही market ने movement complete किया, break किया, sustain की, what will be the movement next? Double the quantity, right? ये 1 hour का plan of action था. So 1 hour का plan of action कहाँ पे है? Exactly did it take the rejection from where we need? Sorry. Yes. ये कल के दिन की. जैसे ही प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे अलोकेट हुआ, व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर? क्या मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट बिल्ड किया या मार्केट अभी भी इंड्यूसमेंट बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, राइट? दिस आर द टू थिंग्स दैट यू विल बी लुकिंग एट द करेंट स्टेज 1 hour में. व्हाट डू यू लुक? Inducement 1, inducement 2, right? But there was no sustainability of the current circumstances, right? When there is no current circumstances, what is the next plan of action that you will be looking for? You will be looking for the second mathematical concept where you will be allocating through the swing high and lows. From which point, if this is my swing high, if this is my swing low, what is the action price that I'll be getting? Your 1.6 will be at 2895, right? With that point of view, अगर इस point of action में market break होती है, sustain होती है, अगर इस point of action में market break होती है, sustain होती है, continuity में आती है, then our next target is directly at 2900 and 2922. So that is our next plan of action that we will be looking for today. तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मेजरली एक चीज चाहिए. क्या है वो? अलोकेशंस ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम. कहाँ पे मिलेगा? 30 minutes, right? What do you guys notice at this point of range? मार्केट सस्टेनेबली ऊपर के लिए गया, एक छोटा सा इंड्यूसमेंट रेंज क्रिएट की यहाँ पे, राइट? इस इंड्यूसमेंट रेंज के साथ एक छोटा सा फॉल, छोटा सा फॉल आने के बाद नो डाउट ब्रेक हुआ, यहाँ पे सस्टेन भी हुई. सस्टेन होने के बाद मार्केट ने क्या किया? डायरेक्टली कंटिन्यू की मूवमेंट? नहीं. रिजेक्शन लेके कंटिन्यू की? नहीं. सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ट्रैप करके थर्ड इंड्यूसमेंट लेवल को फॉलो करके चली. व्हाट इज द थर्ड इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट
ब्रेक, एक छोटा सा कैंडल उसी रेंज में, ट्रैप एंड कंटिन्यू, राइट। कल के दिन जो लाइव में बीटीसी ने किया था, यहाँ पे वही गोल्ड में भी किया। करने के बाद कंटिन्यूटी की, नो डाउट 2893 तक जाके मार्केट ने एक छोटा सा रिजेक्शन फिर से लिया। द ओनली पॉइंट यू विल बी हैविंग राइट नाउ, क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं। फॉर दैट लेट्स कम डाउन टू 15 मिनट्स। What is 15 minutes indicating? 15 minutes is saying अभी के लिए तुम लोग कुछ मत करो, एक इंड्यूसमेंट करके मैं ऊपर जा रहा हूं, बने रहना है तो ट्रेड में बने रहो, वरना नहीं। क्यों? इंड्यूसमेंट 1, इंड्यूसमेंट 2, इंड्यूसमेंट 3, ब्रेक, दिस वाज आवर अलोकेशन पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमने ट्रेड अलोकेट किया था। दिस वाज आवर अलोकेशन पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमने ट्रेड अलोकेट किया था, एंड मार्केट करेंटली इज एट 80 पिप्स रनिंग। सो व्हाट इज द वन थिंग, एड ऑन कब देखेंगे या कंटिन्यूटी में कब रहेंगे? ऑन द ब्रेक ऑफ 2893 will be our add-on point, as well as looking towards the trade movement। नहीं तो यहाँ पे MTSL देके सस्टेन करना बहुत जरूरी है, right? As this is an Asian session, what is the one thing that you have to keep in mind? Not anything more than 100 pips. If more than 100 pips, your MTSL should be strong at the current range. Okay, so this is for this is for gold. So koi bhi doubt hai, please do ask. Any doubts you guys are having? Good morning, Nilesh. Sir, without inducement break, why the trade allocation was done? Can you please explain? Without inducement breakup, there was an inducement, no? Partner 1, partner 2, partner 3, we executed the trade at this range. It was with the inducement only we executed the trade, right? If there was no inducement, we couldn't have looked into a trade, because अगर inducement नहीं build होता है तो I'm okay to leave that trade for a long period of time. Two things you have to majorly look into the circumstances, that is, one, execute the trade at inducements level 2 at the target, single candle rejection, insider candle creation, and the trade execution. These are the only two concepts that I follow to look into the trade executions, right? Allocation उस point of action में क्यों देखे थे? Because the trading volume was built at that point. Okay. So this is for gold. Nilesh, I do get you have got the doubt. No worries, I'll explain it to you again. Let's come down to BTC and come back to the gold, okay? Because we have to look into Indian sessions as well, right? We'll come back to it. Let's go with the daily time frame. अगर कल के दिन मॉर्निंग में नोटिस करोगे, एक चीज एक्सप्लेन की थी, मार्केट कंटिन्यू करना है तो कहाँ तक आके कंटिन्यू करेगा? ऑन टू द लेवल ऑफ दिस पॉइंट, करेक्ट? सो मार्केट अभी बॉडी क्लोज किया है? नहीं किया है। सो दिस इज द रेंज दैट ऑलवेज यू गाइस हैव टू लुक फॉर, राइट? सो डिड द मार्केट फॉल yesterday? If the market wanted to continue from the same point of action, तो मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक जाके क्रैश हो जाता फिर से।
but it followed the rule. When it followed the rule, what is the one thing that you guys have to look for? You guys have to look for the allocation of the major liquidity. And how do you find an allocation through a major liquidity? We will talk in BTC that for today, right? Example, कल के दिन market full bullish था. Every retailers, what were they planning to do? By seeing the scandal of 9,000 points, will you be having a sustainable idea that market could take a rejection? No. What is retailer's perspective? Enter at every point. ये point of action में all the retailers were in the trap. बताता हूँ कैसे. At the current stage हमारा wave क्या है? हमारा wave आके bearish है. Coming down to tide. What is tide indicating? Tide is indicating a movement towards the short. कितना short? जितना allocation point, right? ये हमारा high है, ये हमारा low है, okay? ये हमारा retracement angle है. Math कर लो, you will come to know where exactly the measurements looks like. इसका target आके 85, 100 या 120 कुछ है. Then the movement is continued through the next retracement point and the swing high and low. In the current scenario, what you have to be looking at, you have to be looking at what is the plan that market built at this range. Does it look like a 0.3 entry? Yes, definitely it looks like a 0.3 entry. Did we execute a trade? Yes, we did. Did we close? Yes, we closed. Yes, definitely New York evening session में थोड़े लोगों को SL गए, but that was totally fine because they were in the learning stage, right? उस चीज को समझते हुए इंड्यूसमेंट्स कल थोड़े लोग सीखे, थोड़े लोग अभी भी डाउट्स में हैं. That's totally understandable. At the current range of action, what is the next thing that you have to look? क्या मार्केट एक कैंडल सस्टेन करेगा in next 2 minutes? अगर ये मार्केट कैंडल सस्टेन करता है, नेक्स्ट कैंडल हल्का सा रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में आता है, so our target will be 78,000 as the next range of action 4 hours. अगर सस्टेन नहीं करती है, the market to tend to take a reversal from the same point of action post the inducement build, right? Once the inducement gets built at 4 hours, the market will tend to take a rejection, right? 4 hours में दो inducement build होता है तो भी ठीक है, 3 inducement build होता है तो भी ठीक है, but 15 minutes and 30 minutes 3 inducements are must, okay? 3 partners or one group में दो ग्रीन कैंडल, दो रेड कैंडल, या दो रेड, 3 रेड कैंडल एंड 3 ग्रीन कैंडल, any scenarios can work. But 4 hours 2 inducements can also work. So in this scenario, what is the market saying us? Market is saying that we are bearish as of now in the Asian session. Now in 1 hour, what did the market do? Demand 1. Let's multiply the demand again. Demand 2. ब्रेक होके सस्टेन होके कंटिन्यूटी में आई. What will be the next plan of action? Multiply the demand. Where exactly the market is? At the second demand zone, right? So what should be the next plan of action? Plan of action number 1, जो मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे अभी, प्रीवियस जितना सप्लाई है उतना ही रिजेक्शन यहाँ पे दिखने दो. Right?
दिखने दो। कंटिन्यूटी में कितना होल्ड कर सकते हो? जितना मूवमेंट प्रीवियस है उतना कंटिन्यूटी में ऐड करके चल सकते हो। ओके, इफ द इंड्यूसमेंट इज ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई, उतना ही सप्लाई में रिजेक्शन लेके आती है, then your target one will be 80,000 to 84. Okay, this will be your next target plan of action. So this is 1 hour. अगर मार्केट को रिवर्स होना है, राइट, यहाँ पे भी तो पीओआई बिल्ड किया था, बट यहाँ से रिजेक्शन क्यों नहीं लिया? हाउ मेनी पार्टनर्स डू वी हैव इन 1 hour? पार्टनर वन, पार्टनर टू, टू पार्टनर्स। थर्ड पार्टनर नहीं आएंगे। अगर थर्ड पार्टनर आती तो डेफिनेटली यू कुड हैव सीन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिजेक्शंस प्रोस्पेक्ट। ओके, तो रिजेक्शन लेता भी यहाँ पे कितना रिजेक्शन लेता? जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट है उतना ही रिजेक्शन यहाँ पे दिखने को मिलती। Right, at the current stage, our tide one, what is it indicating? The tide one is still indicating a market is bearish movement. If it continues the break of previous supply, market will move in the same structure. Coming down to 30 minutes, what do we notice? Following the same pattern, हर बार जितना फॉल दिया है उतना कंटिन्यूटी, राइट, जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट यहाँ पे बिल्ड हुआ सप्लाई उतना ही रिजेक्शन। जितना हमारा प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू में था उतना ही रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में जा रहा है। थोड़ा ऊपर से ले लिया है मैंने, राइट, ये नीचे वाला पॉइंट नहीं आ गया। ओके, सो दिस इज आवर रिट्रेसमेंट पॉइंट। इफ यू नोटिस, अगर मैं ये रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ पे अलोकेट करता हूँ, व्हाट डू यू नोटिस? एग्जैक्ट रिजेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन। अगर कंटिन्यूटी में आना है तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? सेम रिजेक्शन पॉइंट। If you get at this range what it's currently taking from, market continuity करके कहाँ तक जाएगी? जितना उसका प्रीवियस डिमांड अलोकेशन है, जो प्रीवियस डिमांड अलोकेशन जितना है उतना ही मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, राइट। दिस इज आवर प्रीवियस डिमांड अलोकेशन जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है। till that point of action will be our targets. So till 1 hour, anyone has any doubts? Right? 30 minutes हुआ, 15 minutes, what are you noticing? There is a partners now. Partner 1, partner 2, partner 3. क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए? डिपेंडिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम अलोकेशन देखेंगे यहाँ पे हम। व्हाट डू यू नोटिस? राइट, अगर आप नोटिस कर रहे हो हर एक जगह पे जहां जहां पे वॉल्यूम्स अलोकेट हुआ है, दैट इज वन ऑफ द मेजर प्राइस एक्शन पॉइंट्स, right? That is not in a running candles, that is not in the direction candles. The volumes are getting allocated where? The volumes are getting allocated in the range of a POI and inducements, right? If you notice this candle, is it in a movement? No, right? This volume as it was in the moment? No. जब तक a range of action है, if it's at the reversal point of action, market will always tend to take a small rejection and continuity of the rally. इंड्यूसमेंट कल के दिन आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मार्केट रिवर्सल करना है, मार्केट विल जनरेट एन इंड्यूसमेंट रेंज। ऊपर जाना है तो नीचे क्रिएट करेगी, नीचे आना है तो ऊपर क्रिएट करेगी, एंड उस इंड्यूसमेंट रेंज में एक वॉल्यूम अलोकेट होगी, ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि एवरी पॉइंट ऑफ एक्शन में वो चेंज होके चलेगी, राइट। सो आप इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक ही चीज को नोटिस करना है, इफ द वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज्ड, राइट, if the tangent movement doesn't give in an allocation, then we are not looking for a directional move,
कल से जो बेटे है उसी प्राइस एक्शन के साथ नेक्स्ट टारगेट जो कि हमारा 74,000 है वहां तक का ट्रेड ऑफ एक्शन हम देख के चलेंगे, राइट। बीटीसी में अगर ये इंड्यूसमेंट ब्रेक करती है, रिजेक्शन ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी फर्स्ट प्लान, रिट्रेसमेंट लेके कंटिन्यूटी सेकंड प्लान, अगर ट्रैप करती है, you know what you guys have to look for. You guys have to look for a small candle closure inside, movement, continuity. Okay, look into only these three circumstances, you guys will definitely be in a trade. तीन ही circumstance को देखना है, ज्यादा नहीं. Okay, so this is BTC for today. Now, anyone has any doubts in BTC? किसी को भी डाउट है बीटीसी में? हिट द लाइक बटन गाइस. नो. ओके, लेट्स कम टू इंडियन सेशंस. In the current range, market has taken a gap down. With the gap down, market sustain हुआ है, right? Market sustain होने के बाद, what is the next thing that you guys have to look for? First, a break. Because यहाँ पे अगर आप mathematical number डालोगे, you guys won't be able to suffice in the market, right? Because यहाँ पे आप दोनों जगह पे mathematical number डाल सकते हो, right? Example, swing high and low of buying side के लिए ये point of action होगा, right? This is your retracement point. So long के तरफ के लिए first plan of action, right? So यहाँ पे let's do the math. So what is my swing high saying? My swing high is at 22,048 minus, sorry, 048.65 minus, what is my swing low? 21,966.15. What is my formulative number that I am getting at this range? 22,048.65 minus 21,966.15, right? Once we get a number, we get a formulative value which is of 82.5. 82.5, right? So what is my retracement point value? My retracement point value over here is 21,989.25, right? Let's calculate the number of that, right? 21,989.25. Direction is bullish. So what we are going to do, we will add bracket open, formulative number is 82.5 into 1.618 into 1.618. Okay, calculate is equal to, what is the target? 22,122, right? So 22,122.73
सो जैसे ही हमारा नंबर निकल के आई, राइट, 1.618 की रेशियो, we will mark that out at 122.65. Then once that level is marked, then you take an intermediate ratio which is from the two and mark it at 21,154.25, right? So we have got two major levels. So let's focus on these two levels as of now. अगर वो ब्रेक होके सस्टेन होती है, then we will look for regiment movement of allocations, not prior to that. 154. Okay, so these are our two level of allocations that we can look and sustain in the markets towards the point of action. Okay, same formula will go for Bank Nifty as well. So what is the plan of action that you guys have to look for? Same plan of action. Swing high, swing low, retracement point. Right, at this point, what is my retracement value? 48,051. I will mark the level. Swing high is at 48,237. Mark the level. Swing low is 47,926.70. That is my next level. So in this point of action, what is the values that you will be looking at? 48,253.20 minus 47,926.70. Formulative number aake, what is it? The formulative number for this price of action is 326.5. How? 48 to 50. 326.5. Okay, so हमारा formulative number आ गया इस point of action में. What is the next plan of action that you guys will be doing here? The next plan of action you guys will be doing is retracement point. What is the retracement point? 48. What is the retracement point that will be changing? The retracement point, what I will be changing is 48,051.55. What is my formulative number? My formulative number is 'So जैसे ही हमने levels allocate किए, what is the next thing that you guys have to be looking at? जैसे ही हमने formulative number allocate किया, उसके बाद we will be taking a retracement point of 48051.55 plus bracket open formulative number which is 326.5 into 1.618 is equal to 48,579.82, right? ये नंबर मिल गया. So अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए?
We have allocated the numbers. Once the level of allocation is done, wait for an small inducement creation, right? How do you look for a small inducement creation? Demand कितना हिट हुआ है, प्रीवियस सप्लाई जितना था उतना ही हिट हुआ है। अगर ये प्लान ऑफ एक्शन वर्क करना है, जितना हमारा प्रीवियस डिमांड यहाँ पे है उतना प्रीवियस डिमांड में से आपको रिजेक्शन देखने को मिलना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लेती है देन यू वेट, राइट? रिजेक्शन लेने के बाद हल्का सा छोटा मोटा यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट ऑफ एक्शन बिल्ड करके आती है, definitely the targets will come down till 22 122.65। सेम सिनेरियो में जितना बैंक निफ्टी में अलोकेट हुआ है, दिस इज आवर मूवमेंट, उतना मूवमेंट अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आके सस्टेन होता है, फ्रॉम देयर एक प्रीवियस रिट्रेसमेंट अलोकेट होती है, उतना ही पॉइंट ऑफ एक्शन से आपको एक ट्रेड ऑफ एक्शन दिखने को मिलेगी। गाइस, इंडियन सेशंस क्लियर है? डोंट कॉम्प्लिकेट इंडियन सेशन, स्क्रीनिंग गिनिंग कुछ नहीं, मैथ्स, जस्ट फॉलो द मैथ, नथिंग एल्स यू रिक्वायर्ड, जस्ट द मैथ, ठीक है? Follow these levels, you will definitely work and you will definitely have the position to sustain in the markets for a very long period of time। Okay, any doubts? Hello, no voice gaya, no audio। Hello, check check। Hello, अभी आ रही है? So this is our Indian markets. Anyone has any doubts in Indian markets, guys? Please do ask. Now it's good। तो मैं अभी जो फॉर्मुलेटिव नंबर सब बताया वो समझ में नहीं आया, मीन्स वो सुनने में नहीं आया क्या? Yes, so in Indian sessions now we wait for an inducement region to be created, right? Yeah, in between नहीं था, okay। In between, sorry, नीलेश, वही तो पॉइंट ऑफ एक्शन डाला था ना यहाँ पे, रिजेक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन। कहीं पे भी आपको रिजेक्शन पर्सपेक्टिव दिखती है एग्जीक्यूशन, राइट? अगर इस इंडियन मार्केट्स में आप इंड्यूसमेंट वेट करोगे, प्रीमियम डीकेस होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गामा स्मेल्ट होता है। Okay, third thing, there will be no delta actions which will be seen in the particular region। Okay, so here inducement don't work। यहाँ पे एक ही चीज काम आती है, where and when। If there is an inducement or POI range, let the market break। Once the market breaks, let the market create a retracement with the retracement allocation। Okay, इंड्यूसमेंट्स फॉलो करना है फोरेक्स में, बीटीसी में, क्रिप्टो में, गोल्ड में। इंडियन सेशंस में अगर इंड्यूसमेंट का वेट करोगे देन मार्केट विल टेंड टू हंट यू आउट इन योर प्रीमियम्स बिकॉज दिस इज ऑप्शन, राइट? फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, फॉलो द इंड्यूसमेंट, नो वरीज। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इंड्यूसमेंट रेंज बिल्ड हो रहा है, ब्रेक होने दो, रिट्रेस होने दो, उसके बाद एंट्री। ओके, yes sir, got it। There is delay in chart messages, so messages get posted delayed, I think। Okay,
So hit the like button, guys. So this is our Indian sessions. किसी को भी doubt है Indian sessions में, please do ask. Excuse me. And all the new members, welcome to the channel. कोई भी doubt है, new members can ask, could give you the explanation regards to the same. ये कहाँ से आ गया? कुछ भी ड्रॉ करता रहता हूँ यार मैं. Hi sir, new member. Welcome to the family and the channel. Whatever doubt you have, Suresh, you can ask. Okay. Sir, how to analyze volume allocation in inducements? Can you please explain? Definitely. नहीं नहीं अरुंधति मैम वेट करो. Wait for a price action, guys. Sorry, price action बोल रहा हूँ. Sorry, my bad. Ah, ah, ah. नहीं नहीं जो ट्रेड में उन लोगों के लिए बोल रहा था. सॉरी अंजलि, माय बैड. सर व्हेन यू एक्सप्लेन द चार्ट सब कुछ कितना इजी लगता है. मार्केट इजी है, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हो मार्केट्स को. राइट, इसलिए बोला मैं मुझे भी ऐसा एक्सप्लेन करना है एक दिन. डेफिनेटली करोगे सुधर, नो डाउट्स. Sir, 40 points running in Indian sessions. First trade allocated today. Thank you so much. वर्षा, ये मैसेजेस फॉरवर्ड्स अभी मत भेजो यार प्लीज, वेट कर लो. टारगेट्स तो हिट होने दो.
नीलेश, आपने एक पॉइंट बोला था, how to analyze volume allocations in inducements. Can you please explain on the charts? Right? Backtest inducements for 6 days. Okay. Get a perfect uh, get a perfect eye onto the inducements, right? Definitely with that we will move to the next chapter, right? हरी हरी में सीखोगे तो एक भी नहीं सीख पाओगे, बीच बीच में आप निकल जाओगे, मतलब थोड़े थोड़े पॉइंट्स, आधा आधा पॉइंट्स कैप्चर करके you won't be able to suffice the entire movement allocation, right? So every time you have to understand one thing. What is that? The one thing that you have to look into the set. Sorry guys. So one thing everyone should look into the spectrums are, first, understand the directions, right? To understand the directions, we have given you the mathematical numbers. Okay? With the mathematical numbers, identify the targets, right? Target identify hua, back test karo, level up karo. This will hardly take you guys 4 days. Okay? So with that, what is the next thing that you guys have to do? The next thing you guys have to look for is the inducement range. Backtesting of inducement range IR will take you 6 days. How will you guys do the backtesting? You guys will do the backtesting mathematical number allocate karoge. With that, you will identify where all are the inducements generated, right? Once you get perfect in this, once you get an eye in this, what is the next thing that you have to look for? The next thing you guys have to look for is the volume allocation, right? So volume allocation को आने से पहले check how perfect is your allocation of revive supply and demand. If your volume allocation of revive supply and demand is 80% plus good, inducement range में, POI range में आप गलत point of view में अगर allocate कर रहे हो, that is 20% drop down. Remaining most of the times you allocate it in the right directions, तो बने रह सकते हो, right? Once this three, MC, inducement and revive supply and demand आपको allocate करना आ गया, वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग विल बी इजियर. ओके नीलेश, अभी मैं आपको वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा, तो यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाई दिस एग्जैक्ट पॉइंट, व्हाई एग्जैक्टली दिस विल बी कॉल्ड एज एन रिवर्सल, why exactly this is the point of action where you have to look for, not in any other inducements, right? Why exactly there should be a group of inducements or a partner of inducements, right? So this understanding of volume allocations through the point of action in any of the charts, I will explain it to you when you are perfect in 1 2 3. Okay? अगर एग्जाम्पल के लिए चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, नॉट एन इशू एट ऑल. गुड मॉर्निंग कृष्णा वर्मा, वेलकम टू द स्ट्रीम. सर आप एक बारी गोल्ड में टारगेट, सर डन डन कृष्णा वर्मा. व्हाट इज रिवाइव सप्लाई एंड डिमांड? सप्लाई एंड डिमांड देख लो, काफी है. रिवाइव इज दिस नेम, ओके? बिकॉज जो रिटेलर्स बाई करते हैं, जो डिमांड करके बोलते हैं, वो हमारा सप्लाई होता है. जो रिटेलर्स सप्लाई देख के शॉर्ट करते हैं, वो हमारा डिमांड होता है. ओके?
डन सर, एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 मिनट पानी तो दीजिए, पानी पीने तो दीजिए। Okay. So how do you allocate a trade in gold? Okay. So अभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई कैसे करें? ये हमारा टारगेट, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग में एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन दैट यू गाइस हैव टू लुक फॉर? ये हमारा एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट में थी, करेक्ट? जब ये एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट में थी, ये रिवर्सल पॉइंट कैसे निकला, प्लीज थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। स्क्रीनिंग जैसे ही गोल्ड शुरू होता है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन से फर्स्ट 6 मिनट्स इज फुल गोल्ड स्क्रीनिंग। यू विल कम टू नो अबाउट द स्क्रीनिंग पर्सपेक्टिव, राइट? स्क्रीनिंग होने के बाद हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या था? हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन पॉइंट हाई एंड लो कौन सी थी इन द सिनेरियो? कल के दिन का हमारा जो हाई एंड लो का सिनेरियो था, ये एंड ये, करेक्ट? इस पर्सपेक्टिव में हमको ये टारगेट अलोकेट हुई थी। लेट्स डू द मैथ, राइट? सो जैसे ही मैथ करेंगे, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू गाइस हैव टू लुक हियर? व्हाट इज माय हाई पॉइंट? My high point over here is 2854.054, subtract it with 2832.424, right? So अगर सेम चीज को मैं फॉर्मुलेटिव नंबर पे allocate करूंगा, so this numbers are totally different. 2854.054 minus 2063, राइट? सो मेरा फॉर्मुलेटिव नंबर आ गया। अभी मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है? मेरा रिट्रेसमेंट पॉइंट आके 2838.318 है। 2838.318। यहाँ पे मार्केट किस तरफ का मूवमेंट देख रहे हो? मूवमेंट 12.63 into golden ratio 1.618. Okay, so that is the next formula that you will be using in the scenario of this. What will be the changes? Retracement point change हुआ 28310 plus bracket open 21.3 point
730 is equal to 29.12. ओके, जैसे ही 29.12 मिलता है, what is the next plan of action that they will be looking for? 2859. सो जैसे ही हमने नंबर ऑफ अलोकेशंस देखा, राइट, फॉर्मुलेटिव नंबर 29.12 निकला। अभी सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से रिट्रेसमेंट पॉइंट ड्रॉ करोगे 2859.340 प्लस ब्रैकेट ओपन फॉर्मुलेटिव नंबर 2912 into 1.618 bracket close. What is the value that you guys will get when you do the math on 2859.340 plus bracket open 29.12 into 1.618, 2906.45, 2906.456. Okay, so next आते हैं same formula, just one thing will change. What is that? Golden ratio से लेके intermediate ratio पे convert. When you convert the intermediate ratio, what is the number that you next get is 2917.58. So let's see where all the numbers got allocated and कहाँ तक market ने movement दी. Right, so these are the numbers that we'll be working on for today's range. Right, कल के दिन का टारगेट्स जो हमने छोटे छोटे पकड़े थे, छोटे छोटे टारगेट्स का मूवमेंट कितना और कैसे, जो कि 2892 का नंबर कैसे निकला, उसके लिए what is the one thing that you have to be doing at this stage? You have to be working on one spectrum. What is that? The formula 1. What is the formula 1? The formula 1 is square root of 2832.591. What is the number that you guys get? 53.22 decimal. We will do the math plus 0.618, right? We will get another number which is 53.84 decimal. Post that, what we will do? We will raise the exponent by 2. What is the target that you guys get? The target you guys get is 2898. Formula is simple. फिर से समझा रहा हूँ. ये टारगेट अलोकेट करने के लिए हर एक मोमेंट में अलोकेशन नहीं है. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 28 53.2205. ओके, प्लस 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 आता है. इस फॉर्मूला को हम ऐड करेंगे विथ 0.618, राइट. उसके बाद एक डेसिमल निकल के आती है, दैट इज
38 डेसिमल्स। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करेंगे भाई। कंपोनेंट ऐड करके उस कंपोनेंट के साथ रेज बाय 2 करेंगे, you will get the number which is 2898. Okay, that is the plan of action, that is the allocations that you have to look and wait for. Krishna, hope you get the point. Vaibhav, hello sir. भाई मेरे पापा नहीं हैं और मैं बिटकॉइन में 6000 लॉस कर चुका हूँ। भाई आप जो ट्रेड लेते हो वो प्लीज मुझे बता दिया करो, आपको देख देख के मैं भी प्रॉफिट बना पाऊंगा। डेफिनेटली बनाओ यार, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। राइट, बताऊंगा नहीं, लेवल्स डाला है, मैथमेटिकल नंबर्स डाले हैं, सिर्फ वही नंबर्स को फॉलो करके चलना है। ओके, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग अगेन, नो वरीज यार। कृष्णा, होप द कंफ्यूजन इज क्लियर। वैभव, यहाँ पे एक ही चीज चलता है, right? Definitely, I do know the feeling how you go through when you don't, or when someone is not around you, but no sympathies here. Okay, सीखना है सीखो, definitely we are here to help you out, but किसी का नाम लेके किसी को ये मत करो प्लीज। ओके, Nitesh, our formulas and fib extension targets are different, or both works in different way? Both works in different way. I'll give you the explanation on that as well. Video बना रहा है, right? जैसे ही video create हो जाएगा, we'll definitely get it out for you guys on the extensions perspectives as well. Okay? Hit the like button, guys. जितने भी नए लोग हैं, please do ask the questions and welcome to the family. एक ही चीज आप लोगों को याद रखनी है, don't trade in FOMO. Have the patience to execute the trades. Trade fearlessly by following the risk management and executing the trades without emotions. Emotions is trade execute होने के बाद profits में है तो खुश होना, loss में है तो दुखी होना. That will break you down and you guys will never be able to achieve the dreams that you're looking for. Okay? Learn, backtest, live test, forward test, execute.
hit the like button. If you're liking the video, if you're learning from the channel, do share and subscribe. Yours is also running with 50 pips. Yo, great guys. On the break, sustainability and move 2898 will be our TP1. Sir, in case of Nifty, it created the swing high and low. Then we did the calculation for expected targets. For entry, we were waiting for the retracement as per the previous demand. But what I am not able to understand is when is the entry point? One rejection, one candle sustainability, one continuity. Example, right? You draw a supply, market is moving in a bullish angle, right? So let's look into the process. This is only for Indian session, guys. Confuse mat hona. Okay, market is moving considerably on to the movement of previous supply. You got a demand creation over here, right? First thing, if your capital is mind blowing, execute the trade at the rejection closure, next candle, continuity. Okay, if your capital is low, let the target hit at the demand range, right? You will get a small candle with that next continuity candle. Okay, in this scenario, if you notice in Nifty, what did the market do? Point of action one, right? ये हमारा डिमांड था, ये डिमांड के हिसाब से
we got a movement allocated here, right? Completion. Now, what did the market do? Market took another retracement as per the previous demand, right? Let's mark that out. In this scenario, market took a rejection, gave a closure. Next candle, you can look for an entry. Sustainable. So this is the plan of action that you have to look at. Okay. So two price actions you guys have to follow. One price action is if the capital is high, wait in the rejection of the demand area you can enter. On the first rejection, second rejection entry. If your capital is low, let the market come to the demand range. Let a candle get cleared in the direction. On the next candle, you can look for a target. These are the only two ways you can look at, right? अगर just for an example समझ लीजिए market consolidation में जाता है, then that is not the action point that you have to be looking at. Okay? Are we supposed to enter on retracement only or should wait for another price action as after retracement it directly moved up, please? Right? अगर इसी point of action में you have got the same price action point, you could have entered here, right? Else you wait for one confirmation candle in the same direction and execute the next. BTC में by mistakenly भी FOMO में एंट्री मत करना, अभी बता रहा हूँ. Sir, thank you for drawing the horizontal lines. अब क्या करें, करना ही पड़ता है. थोड़े दिन जैसे ही सब लोग gets attracted to it, then definitely once they understood the concept, then we'll draw again. Don't need to draw the horizontal lines. Good morning, Rakesh. Yo, Agastya, what are you doing, man? नहीं, wait करो यार. कहाँ चाहिए वहां पे ही चल शुरू हो जाओ, शुरू मत हो जाना. Wait, wait. Good morning, Abhika.
How was Dubai? Fantastic. Yeah, lovely. What is the next thing that we have to look? Do the back testing, right? Place an alert, back test करते रहो, डाउट आया तो पूछो, पेशेंसफुली वेट करो. वेरी सिंपल. गो हियर, कहाँ पे भी अलर्ट रेंज दिखता है, प्रेस ऑन द एड ऑन की, यू विल गेट एन अलर्ट बटन, राइट? Click there, mention a price where once it comes to an option, you can place an order. Okay? So once that order comes, you will get a notification. At that point of time, come to the live. Or else, if you're getting two prospections, press on Alt A, right? You will get an alert key bar open. Press and value at this point of action, right? Once you click add a custom message, you will come to know once the market is in the range of a break. तब तक के लिए बैक टेस्ट करते रहो. Let the market give the indications. Wow, that's a great idea. Yes, that's a beautiful idea. So you also do back testing? Yeah, 7 years ago. Now we do live testing and forward testing. All the new members, welcome to the channel. I'll make it even more clear, no? Nine. I'll add one more text, okay?
Sir, please explain entry scenario for gold. You saw the message, no? Inducement 1, 2, 3, break, sustained, continued. 1. Excuse me. The second, अगर miss हुआ है, let a small rejection take and allocate a continuity then. Else, let's wait for 1 hour closure. Oh, sorry. नया कैंडल आ चुका है. My bad. Right? New candle. अगेन हल्का सा रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में है. अगर 15 मिनट्स का एक कैंडल कंटिन्यूटी ग्रीन में क्लोज करती है तो इट विल कंटिन्यू द मूवमेंट. यू कैन लुक फॉर अ नेक्स्ट एंट्री पॉइंट अगेन. ओके. वेयर इज अनुपम जी? पता नहीं यार. आई डिडंट गेट एनी मैसेज. ही माइट बी बिजी विद द वर्क. वैभव 5K को बचाओ. राइट. And ask your mom or your family members for another 6K and clear the bills. Okay. Rather coming over here and executing the trades without knowing will make you lose the money of that 5,000. Okay. अगर चाहिए किसी के पास नहीं पूछ सकते हो तो व्हाट्सएप में मैसेज करो. अक्नॉलेजमेंट स्लिप को मैसेज करो. रिमेनिंग जो तुम्हें चाहिए ना इस पॉइंट ऑफ एक्शन में 9,000. अगर सच निकली बात तो डेफिनेटली मैं खुद दे दूंगा. पे कर देना. बट वो 5,000 रुपए गैम्बल मत करना. पहले सीखो उसके बाद एग्जीक्यूट करो. फर्स्ट लर्न.
अगर सच में कॉलेज एग्जाम की फीस भरना है तो वो 5,000 को गवाओ मत। प्रूफ दिखाओ कौन सा कॉलेज का है, किधर का एग्जाम है, कितना पेमेंट है, राइट। उस 5,000 के ऊपर जो 9,000 है तुम्हारा वो मैं पे कर दूंगा, बट वो 5,000 गवाओ मत, पहले सीखो। लर्न फर्स्ट। गैम्बल करने के लिए दिस इज नॉट ए प्लेस, एंड ये चैनल में टिप्स नहीं मिलती है, ठीक है। सीखो, एग्जीक्यूट करो। एक्सप्लेन किया है, समझो किस पॉइंट ऑफ एक्शन में ट्रेड है, एंड बने। प्लीज डोंट गैम्बल हियर इन द मार्केट्स। सर बर्ड्स आर हमिंग, दे आर एंजॉयिंग। सूर्योदय की मजे ले रहे हैं वो भी। इंड्यूसमेंट रेंज का ब्रेक आने दो। सर पार्टनर क्लोज प्लीज। आई कांट अंडरस्टैंड। एक सेकेंड सुरेश। वर्षा कोड ऐड कर दो यार ग्रुप में। गैस एक सेकेंड के लिए लैग होगा। सर आई कांट अंडरस्टैंड वर्टिकल लाइंस, हाउ टू ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर आई कैन प्लेस। सुरेश, which chart do you trade in?
वो चार्ट बता दीजिए, उसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। गुड मॉर्निंग नितिन। टेल इन निफ्टी बाई 2888.500, running 40 pips. Venkatraman, good one. Nifty, just give me a moment, I will definitely explain it to you guys. Okay, 30 seconds wait कर लो, कैंडल क्लोजिंग होता है देन वी विल मूव। जितने भी लोग ट्रेड में हैं, एशियन सेशन वेंकटरमन, योर एसएल पॉइंट इज 20 pips. Okay, follow with that 20 pip rule. एक विक जनरेट होने दो, एवरीवन इन द कोल्ड ट्रेड, let a wick generate. Okay, 88 मतलब रनिंग विद 50 पिप्स चल रहा है वेंकटरमन, गुड वन। Okay, so how do you allocate a demand and supply? Okay, so at the current range, Suresh, Nitin, everyone, right? So let a market create a retracement range, a swing high low and a retracement point. Then check whichever side directions first allocation point. In this scenario, this is my supply. Okay, so what I will do, I'll double and keep this supply. Okay, so this is my doubled supply. So मेरे पास अभी supply create हो चुकी है. What is your first point of demand here? This is your first point of demand. Okay, so I've drawn it, I will multiply and keep it. In this range, I have a demand, I have a supply. What is the first plan of allocation that you have to be looking at? जो हमारा first supply है, that will be our target. Okay, exactly where did the market took the rejection from? The previous supply, correct? From the previous supply, what is the next thing that you have to draw? You have to draw a movement which is as per the previous demand. This is your previous demand. You mark the previous demand over here, right? You got a rejection of a previous demand at this point. Once you got a previous demand allocation at this range, what is the next thing that you have to do? What is your previous supply allocation? In this scenario, this is my previous supply allocation.
sorry. In this is my previous supply allocation. In this is my previous supply allocation, right? So at this point of action, I'll just multiply this. Where will I place this supply from the previous demand? Which is the previous demand? The previous demand is as circulative as the previous one, right? This was my previous supply, this was my previous demand. Post that, our target was our previous supply target was hit. We will allocate the next demand which was of previous demand, right? Previous demand allocate हुआ, target complete हुई. Target complete होने के बाद we have the mathematical number, we have drawn that. Okay, post that, what is the next thing that you can look for? The next thing you have to look is, where will be my next retracement point? The next retracement point of yours is from here, from this point of action till this point of action. All right, so I have drawn that. Let's allocate the same level over here. What do you see the rejection? Where do you see the moment rejection from? From the previous demand. At this range, अगर आप notice कर रहे हो, what has market done? Made retailers sit towards the down and gave a closure, right? Post closure, market continued the movement in the direction, and currently market is building a POI range. Hence, what is the next plan of action yours should be? The next plan of action of yours should be from this point of action to this point of action. This is our previous supply. What will I do? I will take my previous supply and allocate it over here. From where? From the previous demand rejection. We took a previous demand rejection. Post that demand rejection, market is currently at the 50% range and sustain. If it breaks, continues, the next target of ours is at 22114.15. Okay. This is how you have to allocate through the previous demands and supplies. Same with Bank Nifty. In the Bank Nifty, what do you notice? You notice this was our first, supply, and this was our first demand, the red candle, correct? So at this point of action, what is one thing that you have to do? One thing, you take a previous supply, multiply it with the retracement point, that is your first target, right? Where is market tend to take the rejection from? At this point, if the market comes down in the range, कितना आएगा? जितना हमारा previous demand है, उतना ही market यहाँ पे rejection लेगा. Okay. In this scenario also, if you notice, market took a rejection, gave a closure, running में retailers को बिठा के, market gave a closure on top of it and continued. Target कितना होगा इस point of action से? जितना हमारा previous supply. In this scenario, this is my previous supply. So I will allocate this over here. Okay. Hope Indian sessions का supply and demand भी clear है. Thanks for the code, sir. In BTC inducements plus fake out. Coming. Give me a moment.
BTC, sorry, my bad. लैग है, एक बार रिफ्रेश कर लो नीलेश, द लैग विल गो। वो बीच में आप कोड पूछे थे ना, वहां पे लैग हुआ होगा। माविच, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया है। ओके, देर इज नो ब्रेक एट द करंट स्टेट। अगर यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, व्हाट आर यू नोटिसिंग? Market is in the zone. Okay, so let a market break either levels. Either levels are nothing but one break, sorry, break, sustainability continue. If the sustainability of the retracement is 2-3 candles is also fine. Okay, but continuity. If not, let the market break, let the market break, take the rejection and continue, take the rejection and continue. Third, trap everyone in this zone. How? Let the market break, one small candle, one more candle, एक candle या दो candle, anything is fine, but not beyond this break. Break candle के अंदर होने के बाद एक drop. The market will tend to complete the movement. Okay. So this is the plan of action that you will be looking for BTC at the current stage. Okay. Hope I'm clear at this point. 90 pips plus 90 pips running, 60 pips running, keep it up. वेंकटरमन 60 पिप्स रनिंग है, सिस्टम में 25 पिप्स पे ट्रेलिंग होना चाहिए, माइंड में 40 पिप्स पे होना चाहिए। ओके, ऑल द न्यू मेंबर्स वेलकम टू द स्ट्रीम। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, एंड हिट द लाइक बटन गाइस। सर टुडे रनिंग ट्रेड गोल्ड में फर्स्ट एक्शन पॉइंट यहाँ पे एंट्री थी। थैंक्स सर, नो वरीज। गाइस एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक हो गया। फर्स्ट एंट्री पॉइंट वाज हियर, फर्स्ट एंट्री पॉइंट, सेकंड एंट्री पॉइंट, थर्ड एंट्री पॉइंट क्लोजर। जो लिए नहीं थे उन लोगों के लिए क्लोज होके कंटिन्यूटी आता है तो यहाँ पे बोला था। 3 ट्रेड्स बीटीसी में, सुबह से कल से जो है इवनिंग सेशन से सिर्फ वही है ट्रेड में, आज के दिन कोई ट्रेड्स नहीं दिया है। निफ्टी में एक लॉन्ग चल रहा है, बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग चल रहा है। ओके गाइस एक बार रिफ्रेश कर लीजिए लाइव पे क्लिक करके, स्ट्रीम विल नॉट लैग। सर मैथ नंबर नो चेंज टू गो पुट साइड। हाँ निफ्टी, नितिन, फर्स्ट टारगेट आद्ರೂ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ತಾಳಿ, the first target number is not yet hit.
of today's movement 22,121. Okay, ಆ ನಂಬರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಅದು ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ there is a reversal identified, there is a movement of a small POI range, first demand generation, small previous supply generation ಆದ್ಮೇಲೆ we will be looking for a short trade which is PE sides. Okay, not prior to that. And guys, one thing, trade what you see, not what you think. Everyone. Thank you, sir. No worries. Do the back testing. कोई भी doubt आता है तो पूछो. Sir, in Nifty, suppose if we are waiting for the target and the market wants to get into the sideways movement, then what price action to look? Delete mat kar. That's fine. If there is something wrong, that's totally okay, but let the message be. Okay, just for an action, समझ लेना कि market इस point of action में आके, हाँ. So in Nifty, suppose if we are waiting for the target and the market wants to get in the sideways movement, then what price action to look for to analyze whether the target will hit or not? Price action is simple. In the Indian markets, if the market comes into a sideways zone or a POI, and if your target is on towards the top, market will break, give a sustainability, continue. Okay? So, post the range of sideways zone, let the market break and sustain. Okay? With the sustainability, let the continuity be till the target. That should be the price action that you will be looking for. Right? If you are looking into the sideways zones, okay, if you are getting a FOMO, yaar, miss ho jayega, trade miss ho jayega, and target is not gone ahead, market will definitely give you an indication. Okay? Always remember there are two types of indication Indian markets gives.
One, market post the POI range or the sideways. First direction, if market retraces at the same point, continuity. Okay. Second point of action, market in the one range point of sideways, market will give a break, right? Immediately within a candle or two, it will create a big price action in the opposite direction, right? There are only two types of sideways breaks. हर बार बैक टेस्ट करके देख लो, जिस तरफ रिट्रेस नहीं हुआ है, market continues in the same direction with the retracement. If the market didn't take a retracement after a breakout, within a candle or two, market will take a rejection and follow through the movement in the direction of the opposite. मतलब मार्केट बुलिश है, साइडवेज गई है, ब्रेक किया है, सस्टेन नहीं हुई है, तो मार्केट बेरिश हो जाएगी. अगर मार्केट बेरिश है, साइडवेज गई है, breakout is towards the bearish side, market will immediately take a rejection towards the bullish side. Okay, only two types of movements that you will see in the markets of Indian sessions in the sideways, right? So चलते चलते, देखते देखते, the targets already has given 100 points move. प्रीमियम्स में 68 पॉइंट्स रनिंग में है. ब्यूटीफुल. बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स दिया है, वेर इन आर टारगेट इज 300 पॉइंट्स, राइट? प्रीमियम्स उतना खास नहीं है बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी, यस, द प्रीमियम्स आर गुड टुडे. गॉट इट सर. किसी ने कमेंट किया था, मैथमेटिकल नमेंट्स, सॉरी, मैथमेटिकल नंबर्स एंड ऑल आर बुलशिट. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करो पहला, उसके बाद मैथमेटिकल नंबर्स सीखो. 30% रनिंग इन निफ्टी, 10% will be your take home. Okay. वर्षा मत भेज यार ऐसे वाले स्क्रीनशॉट सब. तरस आता है उन लोगों के ऊपर. दे आर ऑल इन a ट्रैप करके. Good, Venkatraman. Second day, two trades you have executed, both in green. Yesterday you executed a trade in gold. Two trades, both were in green. Great job. Check, check. वो शायद black coffee होगा. सर एक सेकंड, निफ्टी दिखा दो ना.
सर प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहा है। आप आउट ऑफ द मनी में रहोगे तो प्रीमियम्स कैसे बढ़ेगा? बी इन द मनी एंड एट द मनी। ओके। लंदन सेशंस का मेजर पॉइंट ऑफ व्यू अलोकेशन शुरू होने वाली है 5 मिनट में। Please tell in Kannada mathematical calculations once, please. Okay, Kannada. Let me practice it. Give me a minute. Okay. So at the current stage, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದು ನಿಮ್ದು ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಝೆಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ, ನಂಬರ್. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಬುಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇರಿಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೋ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೇಷಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿತಿನ್ ಅವ್ರೆ. यो योर कन्नड़ा इज गुड. कोशिश कर रहे हैं यार, कोशिश करने में हार कभी नहीं. ये कैंडल अटक क्यों गया?
Nice Kannad. It's Kannada. It's not Kannad, Kannada. Yo, I also want to learn. Learn. Hit the like button. All the new members, welcome to the channel and the family. कोई भी doubt है पूछ सकते हो. If your understanding in the market is less, also that's totally fine. Do ask doubts. Does the concept of supply and demand also applies on option premium charts? No, sir, no. Indice, futures, crypto, forex, gold. Why doesn't apply in the option premium charts? Because when the premium decay happens, it happens smooth. Very smooth. So no. In gold, anyone wants a trade, let a market take a rejection and continue. Then we can look for 30-40 pips movement. So current major Nifty trend is bearish, then why we look for bullish trade today? Is it because at the opening first it made a higher high swing, or I'm missing something? Because market had created a gap, hence the movement. Market will come down, even the market will crash even lower. But at the current stage, we had looked for that because we had got a gap up opening, sorry, gap down opening. With that, we had got an first retracement allocation point, swing high and lows towards the long side, not towards the short. Right? Whichever the action points generate first, then the movement gets allocated accordingly to that. Thank you, sir. ಕನ್ನಡನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Okay, thank you. I got a go ahead from a Kannadiga. Then I speak good Kannada. Thank you. Okay. Nilesh, hope you get the point. Sir, MTSL hit. Okay. Got it.
In current situation, what is the Nifty support? Support 1, support 2. This is the support 1. This is the support 2. Okay. Sir, can I look for a short? Why? Just now I drew a supply demand range over here. No? If it breaks, जो यहाँ पे रनिंग में नहीं लिए with the explanation, they can look for the next entry on the closure of the candle with the wick generation again. Okay. Koncham, sir. I can see that Salem is mentioned in your name.
All the new members, welcome to the channel. कोई भी doubt है पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're getting educated through it, do hit a like, share, and subscribe. Gold 35 pips and Nifty 10% booked. Great. Is this considered a scalp trade? Am I correct? Yo. You're right. Sorry on BTC नीचे रख दिया पूरा. दिख ही नहीं रहा. How many trades Venkatraman today? One gold, one Nifty.
सर शांत क्यों बैठ गए? क्या करना है बताओ। सब लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं. आई एम लाइकिंग दैट. लेट देम कंप्लीट इट. Once their back testing is done, they will have doubts, they will ask again, then we'll work on the next. Brandy, go that side. Sir, how did it enter your room? कभी कभी आ जाता है. When he feel bored, he comes in. What breed is it? I have a husky. I have a Tibetan mastiff. I have a golden retriever. This one is husky.
ಸರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಿಬನಾಚಿ ಇದೆ ನಾ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇನಾ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ I hope I got you right. So you have to understand golden ratio is identified through one golden ratio is identified through 1 plus square root of 5 divided by 2, right? This is the formula for golden ratio, and through this ratio golden ratios are removed, through this intermediate ratios are removed, through this regiment ratios are removed, right? That's when it gets calculated under a Fibonacci tool. Okay, not prior to that. Aita. So 1 plus square root of 5 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. That number is this one. Okay, na? So, and everyone, if the market breaks below this level, sustains, your swing high and low will be this, your retracement value will be this. Okay, post breaking and sustaining the level. Okay, Nitin, clear up. And if it breaks below this level and sustains, swing high and low and retracement point changes and allocation changes automatically. So उससे पहले आप लोग ये number डाल के रख लेना. The swing high number will be this, swing low number will be this, retracement point number will be this. Okay. If it breaks and sustains, what you have to look. Same over here as well. Let's put the formula. 22104.70 minus 12048, sorry, 062.75. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ.
Sorry guys, right? So at this scenario, if this breaks and sustains, what will market do at this point? Market will tend to take the rejection and continue the movement. What you have to do, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक लाइन ऑफ पॉटर्जी ड्रॉ करके जितना हमारा डबल सप्लाई डबल डिमांड है उसका 50% रेंज तक होल्ड करोगे. ओके, वो कंप्लीट हुआ, उसको भी ब्रेक करेगा, देन द टारगेट विल बी 2882, नॉट प्रायर टू दैट. एंड एक चीज याद रखना इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, अभी तक एक कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है. कैंडल क्लोजिंग क्यों नहीं हुई है? फर्स्ट सप्लाई का क्लोजर नहीं मिला है अभी तक. ओके, ये फर्स्ट सप्लाई का क्लोजर है. क्लोज होता है तभी ही नीचे का, वरना इस पॉइंट ऑफ एक्शन से एक कैंडल बिल्ड होते हुए दिखेगी, रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए दिखेगा. ओके, इफ द कैंडल क्लोजेस, then only you will execute a directional move. If not, market will take the liquidity of all the people who are sitting in running and move in the direction of the bullish side. Sir, in today's gold analysis, we use the mathematical concept of square root as well as the mathematical 2.0. Sir, if you find some time, can you show me how to backtest gold using MC? Definitely, we will do that, Mahavich. Okay. म्यूटेड सर. चेक चेक. नहीं, म्यूट में नहीं हूँ. वो ड्राइंग कर रहा था, ड्राइंग करने के बाद एक्सप्लेन किया. ओके, चेक चेक. इंड्यूसमेंट में एक चीज एक्सप्लेन किया था, अगर एवरीवन हैज नोटिस्ड इट. व्हाट वाज दैट? बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ड्राइंग कर रहा हूँ. आई एम गिविंग यू द एनालिसिस. इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? ओके सर, थैंक्स. यू वेलकम. कैन हियर यू नाउ. यो.
फेक आउट इंड्यूसमेंट 3 कब होगा? ऑन वन कैंडल ड्रॉप, एक ड्रॉप चाहिए। यस, ट्रू। Taken a small risk in towards taken a small risk towards short in gold. एक बार मैसेज कर दो कितना बड़ा लॉस है करके, सॉरी कितना बड़ा रिस्क है करके। यहाँ पे नहीं, एलटीडी में। कम कर लो। That small risk shouldn't be more than this number. टेन पिप्स के लिए सब रिस्क इज नॉट वर्थ यार। एटलीस्ट 40 पिप्स चाहिए, 40 पिप्स प्लस, देन मजा है। Nilesh, did you draw the previous demand?
If you notice, Suresh ji has asked till where the support could be. This was our support 1, this was our support 2, right? Where exactly the market is taking rejection from? Support 2, no? Sustaining scenario is on the break. Example, took the break, sorry, example, took the break, sustained, break the support level. Then retracement should come. Then the continuity, right? But in scenario, it took the retracement from the point of the support line only, right? From this support only, the market is taking the rejection. We have allocated the number is ready with us. When you will look for a movement will be looked at when there is a speculation. What is speculation? Break of the previous support, which is this one, with the break continuity. Okay, then let a retracement come, then let a retracement come, then the continuity, then the continuity. Okay, not prior to that. Is the risk worth taking? वो जो इंसान ने लिया है, no man, it's not worth. Then I will know. Okay. आप वही डायग्राम फॉलो करो जो ड्रॉ किया हो. सर कॉल इट एज वाइट फॉर्म फेट थियरी. वाइट फॉर्म फेट की हड्डी जैसे दिखती है. कुछ भी मत बोलते रहो आप लोग. ओके, गॉट इट. कुछ भी बोलते रहो. वाइट फॉर्म फेट थियरी इट्स. वैसे नाम बुरा नहीं है. बट वेजिटेरियंस लोगों को समझ में नहीं आएगा. So let's drop that name. सर फ्री टाइम्स में आप करते क्या हो? महीने में 1-2 दिन मिलता है फ्री टाइम. आई गो enjoying, hiking, night trucks. Do you read books? Yes, I do read books. Recommend one book in layman's language. Psychology of Money, Atomic Habits, layman's language. These are the 2 books you can use for the beginners.
Atomic Habits is written by James Clears, and Psychology of the Money. Morgan Housel. स्ट्रीम लैग हो रही है, नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करो, स्ट्रीम लैग हो रहा है। प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर लो, 2 करो क्यों। थर्टी पिप्स रनिंग, 50% रेंज भी आ गया, ऑलमोस्ट देयर।
No, don't use it on options, please. Options ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. वरुण ब्रेक होके सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट तक होल्ड कर लो. You need only one more drop for your target, huh? Varun. Three more minutes, guys. BTC also finally started. Closure चाहिए 2 मिनट में. Mavish, we need a closure. Okay? Then execution. Not prior to that. Nitin, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 82,204. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. Okay, Mavich. People who are looking for trade in BTC, the market has started to give an indication. Closure, next candle, rejection and continuity. Yeah, retrace and continuity, anything works. Post closure of this candle. So this confuses.
Sir, when is the next important meeting? Friday.
Varun, next target is directly supply to a on the closure 2882. So can you please explain how to target comes out to be 82204, which is previous demand supply zone is considered for the target calculation? I missed that point. Yes. If you notice BTC, this is my TP1. Okay. So I will multiply this. So what does it say? This is my first target range. Did the market break sustained below the level? Yes, market sustained and sustained below the level. What I will be doing over here? I will be multiplying the level. Once the level is multiplied, I am getting a level of execution of 82204. Hence, that will be my first target. Okay. Clear है? Nilesh? First target supply or demand. Demand है ना भाई. That's demand, no? Okay, got it. Apologies when you said I was out. No worries here.
Sir, please draw me how to teach the levels. Your rejection points are as accurate as the market seems like it follows your rules. किस चार्ट को देख के बोल रहे हो? गोल्ड को या बीटीसी को? गोल्ड. ओके. सर 40 पिप्स में एमटीएस से लेट हो गया. कोई बात नहीं वरुण. ऑल गुड. कैन वी लुक फॉर लॉन्ग इन गोल्ड? रनिंग में मत बैठो. कैंडल क्लोज होने दो. नेक्स्ट कैंडल में बैठ सकते हो. ओके. डोंट सिट इन रनिंग. ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈಗ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಯಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ.
Good morning, Danushka. Can we look for an entry for a gold now? Wait, let the market give a rejection one. In continuity, you can look for the next. Okay? Not prior to that. I got your point, Nilesh. So, in your scenario, I'm coming to that point. Give me a moment. Okay? Let's consider a movement. Okay? So, what do you notice? The first demand, what we have taken, the demand of first one is hit, right? The first demand is hit. Post that, what do you notice? The demand did break, did sustain, did continue. Till this equal low of point, the market had continued the movement. With this movement, what you will do, you will definitely at this point of time, you don't have a new demand to re-identify the structure, right? So at that point of time, you will double the first demand itself. Okay. This is the scenario one that you have to follow because it has given a break, sustained, and given a move. 50% point of that will be the first rejection area. In the scenario where you were not in this trade and you were not at that place, then what you will do? You will definitely take the second demand. In this case, this is my second demand. I will multiply it, post an inducement range that will be my next target. Okay. Either ways, my movement is currently showing bearish. So, the safest point to play, which one will be my safest point to play? The safest point to play as of now is the doubling point because you know, post this range, you could get one more retracement at the level. At that range, you will be having that confidence, okay, till 82, 240 I can hold. If it breaks, 81, 200 could be my range. At this stage, have you calculated the number? Have you taken the formulative number? You will be having one final target value, right? So, in that, whichever is your nearest point will be considered your target. Okay. Okay, sir. Thank you. You're welcome. If you didn't get the point, I can explain it to you again, Nilesh. Okay. So always remember you have a mathematical number, post a mathematical number, allocate the direction, no doubt. In this scenario, let's allocate one. This is my first demand. With the first demand, market took an retracement. From this retracement point, there is a second demand. Okay. So at this point, the demand is completed and the market took a break, sustained, and gave a movement.
So at this point of time, you don't have any other demand which you can allocate, right? So us point of action mein, you will be allocating the same demand, whatever you see at this range. Will be your next point of action, right? In that next point of action, 50% will be the first retracement point. Continuity, if the market takes a rejection also, you will be knowing that one point the market could give an action, right? So this will be the nearest target, no? Same scenario. What happened in gold? We took the point of action. With the point of action, market gave a break at the first demand, which market should have been reversed from this point. Now market gave a reversal. I will draw my demand, double it at this point, and I'll keep a 50% range out, right? So 50% हमने range out रखा. So we know that अगर यहाँ से rejection लेता है, then this will be the reversal area. Where in state, we know this is how the market tends to move, right? So if the retracement is created here, and if it wants to continue, what is the next step? Now I will take this demand and I will continue it to the short, not prior to that. Okay. BTC short. कहाँ से किए हो सुधीर? From where you have done? 82 240 is the target. Morning trade plus this current rates, 3 add-ons in gold. What is your TP1? Previous supply. What is the mathematical number? 2906, 2917, 2921. Gold playing in range.
That range is of 110 pips. Market always needs a liquidity before moving big, no? So to understand that, let's come to 4 hours. What is market doing? Hmm? Anyone can say what is market doing in 4 hours? MTSL start कर लेना BTC में. Creating a inducement, correct. So what will market tend to do at this point? Market will tend to allocate a movement drivers. Movement drivers मतलब जितने भी लोग ये बेरिश एंगल फिंग करके बैठे ना, ये बेरिश एंगल फिंग करके बैठे हैं ना, उन लोगों को हल्का सा प्रॉफिट दिखा के मूवमेंट ऑफ अलोकेशन चेंज कर रही है, राइट? Noticing in the perspective, if you notice, market was in the volumes दिखाता हूं मैं एक बार. What do you notice volumes? Where was the volumes indicated? High indication 1, high indication 2, high indication 3. And where are that ranges? Right? In that range, if you notice, the buyer spot 1, the buyer spot 2, because the wick creation, right? When there is a wick creation in the movement, what does the market do? Market tend to allocate a point of action. 4 hours is not looked by intraday, right? 4 hours is looked by a people who is into the swing, who is holding the trades for more than 3 days, 2 days, right? उन लोगों को यहाँ पे क्या बता रहा है? All the allocations from the range of this, wherever the volume has increased, you can see a big wicks created. Post big wicks are created, what is market trying to do? Rejection 1, beautiful, closed, right? This was our reversal area, correct? So take this point 1 and this point as 2. Draw a swing, okay? Let me draw this point as 1, this point as 2, this point as my retracement point. कौन सा आ गया? This point as my retracement point, right? So in this scenario, what do you have to understand? First, is my previous supply concluded and given a movement? This is my previous supply zone, right? In this previous supply zone, multiply it, keep it. Okay? First allocation point. Second thing, let's do the math here. To do the math, subtract the value from 2876.805 minus 2832.720. What is your value that you are getting at this range? 44.13 will be your formulative number, right? Now, let's do the golden ratio for this number first.
from where you will be doing, market is bullish, so you will be adding the quantities from the retracement point. Retracement point is 28.59. 28.59 plus bracket open 44.13 is your formulative number into 1.618. What is the value you are getting? The value you are getting of this level is at 29.30, right? So just look in the perspective of all the wick generations wherever the buyers have sat and allocate their risk management abilities, right? The risk management abilities यहाँ पे 4 hours में क्या होता है? It will be not 1%, it will be not 5%, it will be not 10%. It will be always a range of 35% से लेके 23% तक of the entire capital value. So calculate from this range to this range, it will be between 35 to 25%, right? So this point of actions is understood through the trading volumes, right? Remaining all the movement, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Why did the allocations were not there in the volume perspective? Why were there no volumes in the movement? Why are the volumes in the POI range, in the inducement range? Right? Because there is a circulum circulative of the trading volumes, right? Big players always tend to allocate the money in the inducement range, not in the running candles. Okay, so that's when the market tends to move. Do you think an institution or a hedge fund will look for an entry? Okay, बड़ा red candle close हुआ है, next running में यहाँ पे लेता हूँ. They won't do it. They will wait. They will look for an inducement range. They will execute the trade in that range only because their position sizing and their risk appetite is only 25 to 30% on an account handling, right? So there will be 13 systems in a play for one hedge funds, wherein one account will be of $1 billion plus. In that, 25% to 35% is a range where they will have a risk appetite to allocate, right? उस risk appetite के हिसाब से, if you notice wherever the movements has been allocated, the VIX has been created in the range. In that range only, the market volumes will be in that range only market volumes will be added. So if you guys are saying that the market will give a movement in only running candles, you will be making money, you are wrong. Okay, so this is the things that you guys have to follow in the markets. Okay, always remember this. Okay, hope you guys understood, because this is the point of range where you will identify the speculum, right? Where retailers will get trapped, where the real movement of allocation is identified. This and all are only done in an inducement range. First understanding, what does retailers do in a sideways market or inducement range? नीचे से ऊपर खरीदते, ऊपर से नीचे खरीदते. One point of range, they know they will get the liquidity, boom, yeah, boom. Retailers का account blown, institutions का account filled. Always remember that. Okay. 65 pips running in gold. Should I hold my positions until
the gold reaches 2900, होल्ड करो भाई, आराम से होल्ड करो, MTSL फॉलो करके होल्ड करो. Got it. So Nilesh, hope you understood the perspective why I was saying volumes. I will not help you out as of now. Understand inducement, supply and demand and the math. Then I will come to volumes because of this. Good afternoon, Rachit. Where is the reversal exactly from? Hit the like button, guys, and all the new members, welcome to the stream. कोई भी doubt है पूछ सकते हो. And if you're learning, if you're getting educated through the markets, do hit a like, share, and subscribe. Venkat, hold the trades. Follow this number. MTSL के साथ ये numbers को follow करो. Nothing else you need. Okay? Target 1, target 2, target 3. गोल्ड में जितने भी लोग ट्रेड में हो, 500 पॉइंट्स चल रही है. MTSL will be at 400 points. System trailing will be at 300 points. Sorry, 200 points with CTC. जितने भी लोग ट्रेड में हैं, MTSL फॉलो करो. Be in the direction you guys are right by following the MTSL points. So there you are saying something. Market is in the range. Someone was saying market is in the range. Follow the MTSLs, guys. रॉकेट उड़ गया. कहाँ से उड़ा है? फ्यूल कहाँ से भरा है?
Lovely Ambika, lovely Anjali, beautiful Smita ma'am, wonderful Arundhati ma'am. Agastya, no words at all. Keep it up, guys. What a level, sir. It's amazing. An exact reversal just as you marked. You guys will also able to draw. Focus on learning, guys. One shot में 2900 गया. 130 पिप्स रनिंग अराउंड. 100 पिप्स के नीचे आता है तो क्लोज. उसके ऊपर बने रहना. All the new members, welcome to the stream. कोई भी डाउट है पूछ सकते हो in regards to the markets. जिनको भी डर लग रहा है एग्जिट कर सकते हो. नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. इसी के साथ डे क्लोज करेंगे. मिलते हैं इन द इवनिंग. तब तक के लिए प्रोटेक्ट योर कैपिटल, फॉलो द एमटीएसएल, फॉलो द टीएसएल एंड टेक केयर. सी यू इन द इवनिंग. तब तक के लिए नितेश साइनिंग ऑफ. बाय बाय.